Okay, Rafti, let's proceed ahead with your HR for internal combustion engine. And I start with, SI and CI engines. What is Okay, the sir. difference between SI and CI engines? So spark ignition engine are basically the engine which uses their fuel as petrol, and other the compression ignition engine uses the diesel as their fuel. So the Okay. compression ratio of the spark ignition engine are basically in the range of 6 to 10, and in case of CI engine, it is in range of 16 to 20. So there is a need of a spark plug in the spark ignition engine, but in compression ignition engine, there is no need of spark plug. And the size, comparatively, size of ignition engines are more as compared to the spark ignition engines. So which engine is more efficient? So generally speaking, the compression ignition engine is more efficient than spark ignition engine. Why it is so? Sir, because of higher compression ratios, they are more efficient than the spark ignition engine, sir. Okay, so what happens to the efficiency when the compression ratio is more, Rafti? Compression ratio ज़्यादा होने से efficiency क्यों बढ़ती है? Sir, actually, in case of diesel engine, that is the compression ignition engine. So the fuel diesel is basically is a self ignition temperature is low as compared to the petrol. नो, वो कंबशन फिनोमेना तो ठीक है जो तुम बता रहे Yes, हो। sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि कंप्रेशन रेशियो अगर मैं बढ़ा दूं, उससे एफिशिएंसी क्यों बढ़ जाती है? इसको एक्सप्लेन करो। Okay, sir. Hmm. Sorry, sir, I'm not able to come with the proper explanation of that. Okay, so can you draw auto cycle on PV and TS diagram, Pravdi? Yes, sir. Oh, 1 second, sir. Auto cycle, sir. Hmm. Yes, sir. Okay, so area of both these is same or different? Sir, in case of actually there are the mirror images of each other. The area for the both curves is same. Okay, and can you tell me how do you calculate the available energy in this? Available energy, sir. Yeah. Sir, for a cycle, the area under the area inside the cycle is basically the available energy, sir. नहीं, इसमें जो एरिया है वो है अवेलेबल एनर्जी? Yes, sir. So the area inside the cycle is available energy. Okay, and what about irreversibility? Sir, irreversibility is basically the area that is outside the what we say outside the cycle, but under the curve, that is irreversibility. ओके, अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी होती क्या है वैसे, रवती? Sir, irreversibility is basically the loss in work that is due to many factors such as friction or the any other external factors. The loss in the available actually the loss in the available energy is irreversibility. ओके, अच्छा, मेरे को ये बताओ, टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है? So two-stroke engine में we get one power stroke for one revolution of crank, but in four-stroke we get one power stroke in the two revolutions of the crank. Two-stroke engines are
comparatively more powerful than the four-stroke engine, but they are less in size. But losses in two-stroke engine are more than the four-stroke engine. Four-stroke engines are more efficient than two-stroke engines. आप स्कैवेंजिंग बता सकते हैं क्या है? Yes, sir. Sir, scavenging is the process in which we use our pressurized charge to push out the exhaust gases from the cylinder. अच्छा, सुपर चार्जिंग से क्या समझते हैं आप रवती? Sir, supercharging is basically a process in which we increase the power output of the engine. Sir, इसमें हम जो actually supercharger is basically a compressor जो compressed air send करता है inside the cylinder and it runs on the crankshaft. Supercharger. सुपर चार्जर से एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सुपरचार्जर से efficiency पे सर एक्चुअली एफिशिएंसी से डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज सुपरचार्जर जो इनपुट ले रहा है वो ले रहा है क्रैंकशाफ्ट से, तो एनर्जी ऑफ द सॉरी एफिशिएंसी ऑफ द इंजन शुड डिक्रीज बट द पावर आउटपुट विल इंक्रीज सर. लेकिन व्हेन वी ऐड हीट एट हायर टेम्परेचर, यस तब तो उसकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए. सर बट इन सुपरचार्जिंग वी आर just adding the compressed air so in the engine, so more oxygen is available to the engine for combustion. अच्छा, मेरे को ये बताइए रवती, ये आपका जो टर्बुलेंस है ये कौन से इंजन में ज्यादा होता है, एसआई में या सीआई में? Turbulence है, so I will say compression ignition engine में turbulence से ज्यादा होता है. ऐसा क्यों? Sir, because in compression ignition engine there is a heterogeneous mixture of fuel and air, so वहाँ पे uncontrolled type of combustion होती है. But in spark ignition engine a proper flame wavefront of the flame is formed that propagates towards the bottom dead sensor, bottom dead center. So I'll say turbulence is more in compression ignition engine than in spark ignition engine. ओके, सो लेट मी गिव यू द नाउ फीडबैक रवती. Yes, sir. रवती देखो, आपको ना थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा. ये सारे का सारा इंटरनल कंबशन इंजन मैराथन सुन लो, उसमें हैं ये सारे आंसर्स. कई जगह Yes, मिस sir. कर रहे हैं. सुपर चार्जिंग से एफिशिएंसी भी बढ़ती है, पावर आउटपुट भी बढ़ती है. Okay, sir. और जो अवेलेबल एनर्जी आप बता रहे थे वो गलत है. अवेलेबल एनर्जी ऐसे नहीं निकलती, दो दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लेकिन अवेलेबल एनर्जी निकालने के लिए टी नॉट डेल्टा एस से रिलेटेड कंसेप्ट है वो. Q1 माइनस टी नॉट डेल्टा एस. टी नॉट आपको फिक्सअप करना पड़ेगा, और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज जो है, तो टी नॉट डेल्टा एस एरिया निकल जाएगा टीएस डायग्राम से. और फिर Q1 जो है वो टोटल एरिया है उसके अंदर, प्रोसेस Yes, के sir. अंदर. तो वो जो बाकी बच गया वो फिर आपका अवेलेबल एनर्जी है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट. एंड क्यों कंप्रेशन रेशियो से क्यों एफिशिएंसी बढ़ती है? उसका रीजन है कि जितना कंप्रेशन रेशियो होगा उतना ही कंप्रेशन ज्यादा होगा. कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ जाएगा. तो जो डीजल इंजन है ना, उसमें हीट एडिशन इज एट हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर. Yes, sir. एंड वेन एवर यू एड हीट एट हाई टेम्परेचर प्रेशर, उसके अंदर अवेलेबल एनर्जी ज्यादा होती है. एंड वही इवेंचुअली एफिशिएंसी का रीजन होता है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच ही वाज ट्राइंग टू आस्क यू, राइट? Okay, sir. हाँ, तो अभी थोड़ा रिवाइज करो रवती, इसके जो मैराथन्स है. एंड कर रहा हूँ.